students, in this video we are going to talk about what to do when you don't understand the passage during CLAT exam. Now, is that possible? Yes, that is definitely possible. क्या ऐसा students के साथ हुआ है? ऐसा students के साथ हुआ है और हो सकता है आगे भी कि they come across a passage during CLAT exam जो उनको literally समझ नहीं आ रहा है कि यार passage चाहता क्या है हमसे. So what we are going to do here, I'm going to show you some techniques, right? Not major points, बहुत सारे नहीं. We are going to talk about 3 points, 3 major points that we should do अगर ऐसी कोई चीज हमारे सामने आ जाती है तो. I want to give you some information about some upcoming batches and upcoming important tests that I'll share with you later on. First, let me start with this session. So yes, what are we going to talk about here? What to do when you don't understand the passage during CLAT exam? ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है. राइट आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो कि रिलेटेड टू विच इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज. इन दैट केस वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट आइडिया, और इफ वी आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड वी गेट अ साइंस पैसेज, so what happens, we are not even able to get the technicalities about what the passage is actually talking about. So in that case, what we are supposed to do? Right, people say कि read the newspaper, read the magazines, go through this thing, go through that thing, you will be able to do most of the things, which is very important. Right, आपको जो passage आएगा हो सकता है आपको you are able to understand that absolutely very well. लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद after all these preparations, it's very well it's possible कि एक पैसेज ऐसा आ जाए, एक या दो पैसेज ऐसे आ जाए about which we have never read and we have no idea about. So I would say, everybody would say don't panic, but I would not say that. It's very obvious to get panic. But our life is depending on it, right? हम क्लैट का ही तो एग्जाम देने आए हैं, लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन इट, हम जो करने आए हैं उसी में ही हमें चीजें समझ नहीं आ रही तो वी आर गोइंग टू गेट पैनिक. बट दैट्स ओके. द थिंग इज कमिंग बैक टू द मेन थिंग, राइट? टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है या हाउ डू टॉपर्स वर्क? ऐसा नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता पेपर में, दे आर स्केयर्ड, बट व्हाट डू? दे नो हाउ टू कम बैक टू द मेन पॉइंट, राइट? चाहिए क्या हमें आउट ऑफ द पेपर. They are able to do that. Now with 3 points, I'm sure even you guys would be able to do that. So what's the first point I would share? Now suppose there are 6 passages and out of the 6 passages, हम 4 passages कर चुके. We are very well able to do the 4 passages, but 2 of the passages remain. Right? 2 of the passages still remain, which we have no idea about. So what to do in that case? Have you ever heard about doing best out of the waste, right? Finding out best out of the waste. So those 2 passages are like that for us. We have done the 4 passages very well. So why to let them go waste? जो 2 passage समझ नहीं आ रहे, right? Try to do your best out of it. And using these techniques, आप एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस तो आई एम श्योर 3 से 4 नहीं तो चलो 2 से 3 क्वेश्चंस भी अपन ने किए तो वी आर नॉट एट अ लॉस देयर. फाइन. सो व्हाट टू डू इन दिस केस? फर्स्ट आई विल मेंशन द फर्स्ट पॉइंट देयर कि क्या करा जा सकता है. व्हाट टू डू? देयर इज अ पैसेज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. इन दैट केस डू नॉट पैनिक. पैनिक हो रहा भी है तो फाइन, कम बैक टू रियलिटी. हाउ टू डू दैट? That's the first point. Read the questions first. Now, what is this point? What is ma'am talking about? Read the questions first. I'll let you know. Yeah, for example, I'll ask you, okay, yeah, there is a room. It's a messy room. It's a big room. Go inside that room. मैंने उसमें आपके लिए गिफ्ट रख रखा है, वो गिफ्ट ढूंढ के लाओ. You will go inside the room. You will search the room. हो सकता है आपको गिफ्ट मिल जाए, हो सकता है आपको गिफ्ट मिले ही ना. ठीक है, और अगर आपको गिफ्ट मिले तो आपको बहुत टाइम लग गया, राइट, उसको ढूंढने में. नाउ आई विल टेल यू कि गिफ्ट जो है वो एक इट्स अ स्मॉल बॉक्स. आई विल गिव यू द डायमेंशंस, आई विल गिव यू द कलर, इट इज रैप्ड इन दिस पेपर और इट्स देयर इन द रूम. कुछ it's hidden somewhere. Just go and search, right? Go and look for it. Now I have given you the specifications. What I have given you? I have given you the specifications so you know what to look for. तो अब अगर आपके पास ऐसा पैसेज आ जाए जो आपने कभी देखा ही नहीं है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू रैप योर हेड अराउंड इट, राइट? सो लुक फॉर दोज थिंग्स. लुक एट दी क्वेश्चंस फर्स्ट. क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अब आपको पता रहेगा कि मुझे पैसेज में से क्या चाहिए, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, राइट? That is the first point. Always read the questions first if you are not able to get anything there, right? Question से पता पड़ जाएगा
बहुत क्लियर हो जाएगा. दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, आई एम लुकिंग फॉर द मेन पॉइंट. मेन पॉइंट किधर होता है? मेन पॉइंट इज यूजुअली व्हेन समबडी इज डिलीवरिंग अ स्टोरी. कोई कुछ स्टोरी बता रहा है, कोई पॉइंट बता रहा है, तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, एंड में कंक्लूजन होता है. वहां से हमें पता पड़ जाता है कि यार किस चीज के बारे में बात हो रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मेन पॉइंट देयर इन द पैसेज, ऑथर क्या बताना चाह रहा है, दैट वुड बी मेंशन समवेयर इन द बिगिनिंग, दैट वुड मेंशन समवेयर इन द एंड, एंड व्हेन यू नो व्हाट टू लुक फॉर, दैट बिकम्स इजियर, राइट? So read the questions first. Always read the questions first. Next cheese. Focus on the keywords. Why I am telling you to focus on the keywords? I'll give you an example. अगर आपको पैसेज समझ भी आ रहा है, right? आप अपने सामने एक पैसेज लो, उसमें क्या करो? Take a marker. Every fourth word या फिर एवरी फिफ्थ वर्ड को मार्कर से ब्लैक मार्क कर दो, एंड देन ट्राई रीडिंग द पैसेज. इफ यू आर आप छुपा रहे हो, इफ यू आर आपने छुपाया है एवरी फोर्थ वर्ड, तो यू आर नॉट रीडिंग 1/4 ऑफ द पैसेज, एंड एवरी फिफ्थ वर्ड, देन यू आर नॉट रीडिंग 1/5 ऑफ द पैसेज. बट स्टिल जब आप एंड तक आओगे, आपको पैसेज में थोड़ी बहुत चीज या काफी कुछ चीज हो सकती है आपको समझ आ जाए, एंड यू विल स्टिल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? यू आर नॉट रीडिंग 1/4 और 1/5 ऑफ द पैसेज, स्टिल यू आर एबल टू गेट द पैसेज. अब ये कंडीशन लगाओ when you are not able to get the passage at all. So what happens, अगर मैंने keywords पकड़ लिए, अगर मैंने वही चीज जाके passage में ढूंढी, तो will I not be able to answer the questions? Yes, I will be able to answer my questions. Passage आपने कम पढ़ा है, तब भी आपको समझ आ रहा है, right? Link that situation to you are not able to understand the passage. What do? You look for the keywords. Always focus on the keywords. This is the passage asking about. ठीक है, vocab questions होते हैं, synonyms, antonyms के, या फिर anything something like that, तो ये सारे आप कर ही लेते हैं. No harm doing these questions, right? तो ये questions हमारे पास easily हो जाते हैं. But जैसे question आ गया inference का, क्वेश्चन आ गया आपके पास कोई टेक्निकलिटीज का, उसमें जो पूछा है, तो कीवर्ड्स विल ऑलवेज हेल्प यू आउट देयर. Last and the most important point which the students often tend to forget, right? What's that point? Stick to the main objective. They forget कि हमें करना क्या है. Why this happens? Right? आपको passage, there is a passage in front of you and you are not able to understand that passage, you start panicking. There are many students I have observed के they have read the passage and they come back and tell me कि मैम passage समझ नहीं आया. Whenever we are doing it in class, when we are doing the passages in class, they often tell me कि मैम नहीं आया passage समझ में, what it is trying to say. आप लोग भूल जाते हो कि आपका main objective क्या है. You lose the focus there, right? You start zoning out. Once एक ऐसा passage सामने आ जाए कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही, you start zoning out. So what to do in that case? Stick to the main objective. What is your main objective? Your main objective is to answer the questions. Look for those type of things, look for those type of questions that you can answer very well. बच्चे जब यही चीज भूल जाते हैं and they start panicking, they are not able to actually come out of it, right? वो नहीं कर पाते हैं questions answer. Reason being they forget what they are doing, right? Panic करना, that's okay, but forgetting your main objective, that's not okay. आपका main objective है questions को answer करना. Always to look for those kind of questions that you can answer, right? Passage में अब आपके पास आए हैं 5 questions. 5 questions में से if I'm looking for the keywords, question देख के, question पढ़ने के बाद passage पढ़ा मैंने and I can answer 2 to 3 questions with this technique, that is good enough for me. Out of 5, this is the habit of toppers. Out of 5, they are not losing 5 questions. They are not losing their hope. क्या करो? Go back to the passage. आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, उसको मार्क करके रख लो. You are not sure, but आपने मार्क करके रख लिया, so that even if you are leaving those 2 passages, right? Out of the 6 passages, you are leaving 2 passages. You have done 4 of the passages nicely. You are leaving 2 passages कि मैं वापस आके करूंगा, तो क्या हो जाएगा? वहां पे आपने मार्क करके रखा है. अब आपके लिए जो गेस वर्क होगा वो बहुत आसान हो जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट मैंने मार्क किया था, क्यों मार्क किया था. लेट मी गो बैक टू द पॉइंट एंड लुक एट इट. Fine. This is a habit of toppers कि they do not leave the questions. 5 क्वेश्चन है आपके एक पैसेज में, आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, you are losing 5 marks. लेकिन अगर आपने उसको बिना ज्यादा टाइम दिए, आप अगर पूरा पैसेज पढ़ने बैठोगे, आपके ऑलरेडी समझ में नहीं आ रहा है, और आप अगर पूरा पैसेज पढ़ने बैठोगे, you are already panicking a little bit, you are already panicking there, and you start reading the passage, trust me, it is not going to help you out. It is not going to help you out. तो क्या करें? Read the questions,
Focus on the keywords. Remember your objective. Your objective है आंसर करना, क्वेश्चंस आंसर करना, ऑब्जेक्टिव पैसेज समझना नहीं है. कई बच्चे तो ईगो में भी आ जाता है कि यार मैंने इतना पढ़ा है, मुझे पैसेज समझ क्यों नहीं आ रहा है, या आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, स्टिल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. यू डोंट हैव टू पुट योर ईगो, यू हैव टू पुट योर ईगो असाइड. अगेन आई सेड, ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. ठीक है, पांच क्वेश्चंस है, 5 में से 3 भी हो जाते हैं ना, दैट्स वेरी गुड फॉर मी. नाउ इमेजिन यू हैव डन 4 passages nicely, and out of the 2 passages you are able to get 2 to 3 questions right, so you are losing very less. So in that case, अगर आपके पास ऐसा पैसेज आ जाए जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, stick to these points and I'm sure you will be able to get something good out of it. Right, so this was all what I wanted to talk about. Let me show you the upcoming batches which we are having here. So all India mock test, now that's an important mock test for CLAT 2023 and 2024 aspirants. Do give this mock. CLAT 16th October को 2 PM पे you are having this mock test. AILET का you are having on October 29th 11 AM you are having this mock test. Do give it. Do not forget to use the code Purvi Life 10. With this you will be able to start the test. And now there are some exciting prizes. Rank 1 is going to get 100% scholarship, rank 2 75% scholarship, rank 3 50% scholarship, 4 to 5 30% scholarship, and 6 to 10 they are going to get around 20% of the scholarship. So enroll right now. 15-month subscription for CLAT and plus an iconic subscription. There is 10% offer price going on. Use the code PurviLife10 and yes, start your preparation right now. So the videos which are being uploaded, they are uploaded on a new channel now. Also there is a new channel, this Unacademy Legal Worlds. Please subscribe to it. You will get many such useful videos which will help you out here. Scan and subscribe right now to this QR code. These are some of the toppers who have made it to top NLUs by doing their preparations from Unacademy. So many congratulations to them. CLAT Iconic program, how is it different from Plus? You get one-to-one live mentorship, live doubt solving, raise a hand. Also there are notes which are shared with the Iconic students. So yes, you have many benefits of both the Plus and more benefits for Iconic. Target MU, it's a beginners batch for CLAT 2024 aspirants, and for those students who are preparing for other law exams, it's going to be in English. It starts from 6th. And I will be taking the portion of quantitative techniques. So I'm going to give you, यहाँ पे मैंने आपको बताया what to do when you are not able to understand the passage. I am going to tell you what to do when you do not understand a question in your mathematics exam, right? In your not mathematics exam, in your quantitative techniques part, right? आपने preparation नहीं करी है, end में आ गए हैं हम, we are left with we are not even complete 2 months, we are left with less time. So what to do? How to prepare? So that we are able to do good questions there, or we are able to do a good number of questions. We are able to get at least, we are able to get at least 13 to 14 marks out of 15. We do not lose there. I'll tell you the techniques there in my next session. So these are some of the Iconic and Plus subscription charges. Do not forget to use the code. I'll again say Purvi Live 10 and you will get a 10% discount instantly. 30 most important questions for CLAT 2023. I will be taking the quantitative techniques session on 6th of October at 11 AM. So yes, do attend these classes. They would be taken by different educators. They are going to give you 30 most important questions. Join your dream NLU college with Unacademy CLAT. आपको कोई प्रॉब्लम है, you are not able to understand something, academic counselor is always available for your assistance. Call on this number Monday to Friday 10 AM to 7 PM. So I hope you are able to get the gist of the whole video, right? What to do? Panic करना ना easy है, और पैनिक सबको होता है. ऐसी बात नहीं है कि people or students do not panic or they do not freak out when they are going through these kind of things. So what to do in that case? What to actually do in that case? Always come back to your main objective. That is the thing which is going to help you out. Do not lose that focus. Always come back to the main objective. This was all for the session. Thank you so much.